ভরা তোমারি প্রীতিতে গড়া তোমারি স্মৃতিতে ভরা সে স্মৃতি আজো মলিন সে স্মৃতি আজো মলিন মরম উদ্বেল করা তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি প্রীতিতে গড়া তোমারি গীতিতে ভরা সে হাসি করে যে উন্মন সে বাঁশি করে সম্মোহন সে হাসি করে যে উন্মন সে বাঁশি করে সম্মোহন সে রাগে ভরে অনুরাগে সে রাগে ভরে অনুরাগে সে ডাকে হই আপন হারা সে ডাকে হই আপন হারা तुम्हारी नहीं है कनेक्ट कर पा रही है नहीं कर रही है बोल रही थी कि प्रीतिते भरा तुम्हारी गीतिते भरा से प्रीति दे मने दोला से गीति करे अपन भोला से प्रीति दे मने दोला से गीति करे अपन भोला से दूती चेतना जागिए से दूती चेतना जागिए आलोके দেয় ভরে ধরা আলোকে দেয় ভরে ধরা তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি প্রীতিতে গড়া তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি প্রীতিতে গড়া তোমারি গীতিতে ভরা সে স্মৃতি আজ অমলিন সে স্মৃতি আজ অমলিন মরম উদ্বেল করা মরম উদ্বেল করা তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি প্রীতিতে ভরা তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি গীতিতে ভরা তোমারি গীতিতে ভরা তাও বাকি যে पूनम दीदी स्टार्ट करिएगा।
नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई सो मेनी श्रद्धा गेट स्टक इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अभी अभी जो दिल्ली में ये जो घटना घटी है, हम लोग उसको बेस करके इस तरह की जितनी घटनाएं हैं उस पे भी डिस्कस करेंगे, और अदर भी जो रिलेशंस हैं, इसको इंटीमेट रिलेशन कहते हैं, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेन मेन पॉइंट्स हमारे हैं, रादर देन पॉइंटिंग द फिंगर एट द विक्टिम्स, experts says it's impossible to intimate partners violence. दूसरा है social pressure of parents, judgmental and fears of what society say about my kids. मेन बिहेवियर विथ women एंड गर्ल्स, ये तीन चीजें मेन रूप से दीदी लोग द्वारा लाया गया है। लेकिन आज हमारे पास जो भी एक्सपर्ट्स जो इस पे हैं वो अपनी राय देंगे। कुछ नई जनरेशन की हमारी लड़कियां जुड़ी हैं जो इसको विशेष रूप से सुनना चाहती हैं, और अपने अपने वो लोग अलग अलग फोरम पे, स्कूल कॉलेजेस में भी इस पे डिस्कस कर रही हैं, जो चाहती हैं कि हम यहाँ से कुछ मटेरियल लेकर के जाएं और अपने डिस्कशन में इस पे हम स्पीच दें। तो मैं चाहूंगी जो हमारे सीनियर दीदी हैं कुछ ऐसी बातों को रखें जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं उससे कुछ सीख भी ले सकें। और कुछ हमारी दीदी लोगों का ये सजेशन है कि हम लोग डायरेक्ट लाइंस को सिर्फ कोट रीड करके कोट नहीं करें, इससे बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। हम लोग अपने शब्दों में बातों को कहें, बनिस्बत कि हम किसी बुक से रीड करें या फिर हम E9 को ही डायरेक्ट रीड करें, क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल है। और जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो अगर साइड से चाहेंगे तो उन लोगों को अलग से ग्रुप में वो सारे कोट्स हम लोग डाल देंगे, जिनको जरूरत हो वो अलग से मैसेज करके मांग सकते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी की टॉक्सिक रिलेशन में आवाज नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनके हमारे पेरेंट्स को प्रभावित करेगा। अच्छा करके जो कहिए छोड़ रहे हैं किसे। एम आई ऑडिबल दीदी? हेलो, कोई दीदी बताएंगे कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, ठीक है दीदी, आ रही है। तो जी दीदी धन्यवाद। तो इस तरह से कि हम इनको क्या ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं जो आगे ऐसे लोगों के साथ नहीं हो, और कोई अगर मुसीबत में है तो उसको क्या हेल्प दिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके का सामाजिक स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है जहाँ पे लोग लिव इन रिलेशनशिप को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में शुरू से विवाह जैसी प्रथा थी जिसको बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, विशेष रूप से वहन करने को विवाह मानते हैं। उस बंधन में लोग नहीं बंध करके लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हैं? कि कहीं ना कहीं वो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसके बंधन में वो नहीं आना चाहते। इस वजह से वो लोग इस तरीके के रिश्ते बना रहे हैं और रह रहे हैं। ये लोग समाज से धीरे धीरे कटने लगते हैं, जिसका एक अत्यधिक दबाव उनके मन पे पड़ता है, उनके दिमाग पे पड़ता है, और वो समाज से कटने के कारण कुछ कुछ गलत एक्टिविटीज में भी इंडगल होते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा तो न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन बचपन से बच्चों को दिया जाए, जिससे वो असामाजिकता की तरफ ना बढ़े और मॉरलिटी उनके पास रहे, स्टैंडर्ड मॉरलिटी हो जो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। इस मटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन है जो उनको गलत की तरफ प्रेरित करता है। सबसे पहले तो समाज से जो कट जाते हैं वो ज्यादा गलत करते हैं। जैसे एक नदी बहती रहती है तो उसका पानी बहुत साफ सुथरा होता है, और अगर वो सब कुछ पानी कट के किनारे हो जाए तो वो पानी में बहुत जल्दी बदबू आ जाती है। तो कोई व्यक्ति भी, कोई भी ग्रुप हो, अगर वो समाज से कट जाता है, समाज से बिल्कुल अलग होता है, तो टॉक्सिकेशन उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से टॉक्सिक रिलेशन भी बनने लगते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी कहीं अगर है तो ह्यूमैनिटी है, तो वहां पे हम लोग किसी भी, हमारा जो प्राउड में भी है कि किसी भी बच्चे को हम लोग इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं होने दें। इस वजह से
हम लोग विवाह जैसी संस्था के को हम लोग सपोर्ट करते हैं, नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ज्यादा इसमें तो लोग कम से कम हमारी तरफ से जो है बच्चियां जो हम लोगों को समझ पा रही हैं वो इस तरफ जाएं ही नहीं। समाज का जो बंधन विशेष रूप से वहन करने का बंधन बनाया गया है उसको बहुत पवित्रता के साथ हिंदू मैरिज इज अ सेक्रामेंट कहते हैं हम लोग। ये सोशियोलॉजी का भी एक रिकॉग्नाइज डेफिनेशन है। तो हम लोग उस तरफ भी ध्यान देंगे। और मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि समय काफी आगे आगे निकल चुका है। और कोई इस पे एक्सपर्ट दीदी हो जो इस पे शुरुआत करना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगी। Didi, Veena Hari Didi is present there. Will you like to share something, Didi? Okay. I have, I think ever since when I was in the meeting last time, the question has come to my mind, and this is universal. It can happen anywhere. How many women really would take an action against violence right away? You know, I think I have seen in my life with some very close friends and relatives that they suffered a lot before taking any action. You know, as a matter of fact, I saw a woman who had a bruise on her eye, and I said, "Oh, did your husband hit you?" Said, "It was just a joke." And she says, "No, I hit the corner of the cupboard." Then after a few weeks, we found out that she had more bruises, and her husband was the one who was the violent one. And it took her like about an year to get out of that relationship, you know, and this is in America. In India, it probably is even harder. I'm just wondering that how can we prepare the women so that I think the violence shouldn't even come. They should be prepared to deal with it before somebody raises their hand, you know. And the question keep coming that, would I go take help right away? Probably not. Even I think I'm very well educated, but I don't know if I've done it right away. Would I leave right away? Do I have a place to stay, safe place to stay? Even in the shelters here, one woman called me, Asian woman, and she says she doesn't have a place to stay. I said, how about going to the shelter? And she says, no, I don't want to go there because I might be robbed there, you know. And, you know, she didn't feel unsafe. So we had to find her a place in a motel. Some motel owner was nice, you know. But well, how can we prepare? Should we have a course for them in the college level, first year, you know, relationships and how to deal with violence, you know, should be a part of required course for everybody so that this does not happen anymore. This is very, very, very sad, actually. You know? And what you're describing about Shraddha is unbearable, you know. Thank you. Very nicely explained, Didi, and especially the shelter homes. They are not safe for women and girls, and even teenagers and little girls were raped there. We know the case of the Muzaffarpur shelter home, what happened there. If you are in America, so you might not be knowing that, but in India, everyone knows that. Too much brutal cases were there. Many murders were happened there. Anyone more? Any Didi? Mira Di, are you there? I would like to say something. Geeta Didi. Yeah, say. Start. Josna. That today Are I you got Josna? one information. Yes, good evening, everyone. Good evening. Good evening. Continue. I got information that in 1 hour there are 4 cases of rape. I mean to say that there is a recording or some survey that in 1 hour, every 1 hour, Every 4 hour. rape case.
yeah, every 1 hour 4 rape cases are going all over the world. So this is the condition, this is the bad condition of whole the world, or we can say that India. And India is one of the country in whole world who respect the women as as compared to any country, because in India women are compared as No, no. mother first of all, and second, in India relationships are so much respected, but still there these kind of things are going in India. So it is a very difficult situation for our upcoming society. Yeah, very, very well explained, Josna. And I think Geeta Didi is present here after many meetings. She was absent in last many meetings. I want to listen her. Geeta Didi, Namaskar, will you like Didi. to share something? Namaskar, Didi. Why are you hiding yourself? Oh, no, Didi. Actually, I am so busy. I have a so busy schedule in my life. That's why I am not present in all the meetings. So I would But like we to say always wait something. for you. Oh, Yeah. thank you so much. It's my pleasure to present in the GPI meeting. But right now I am unable to speak something. I will speak after some speakers. Okay, please. I will say Okay, after Didi. some. Please stay tuned. Okay. Yes, Okay. yes. Thank you. Welcome. Now, Geeta Raul, Didi, will you like to contribute something? दीदी हम लोग Nobody is raising hands, so I. Yeah, Didi. यस एक्चुअली दीदी इस बारे में हमारी बात पहले भी हो चुकी है, हम लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं ये, बट वही मैं आपसे भी कुछ इसके बारे में स्पेशल कमेंट सुनना चाह रही थी। जैसे अभी हम लोग सब जानते हैं कि भाई वुमेन्स तो बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो लोग तो कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग शी कैन डू, फिर भी ये सब कुछ क्यों होता है? ये होना नहीं चाहिए क्या? हमारा अभी जैसे पहले वाले दीदी ने बोला कि क्या हमें एक कोर्स रखना चाहिए, मतलब आज हमारे पास हमें इतनी जरूरत आ गई है कि इतना सारा मार धाड़ हो रहा है, इतना ब्रुटल होता है, उसके बावजूद भी लड़कियों को समझ में नहीं आता है क्या? ये केसेस तो हम लोग आए दिन देखते हैं न्यूज में, हमें तो न्यूज चैनल पे रोज एक किस्सा सुनने को मिलता है। शायद मैं एक की बात करूं क्योंकि सिर्फ एक ही केस को बताया जाता है, वेरएज बहुत सारे केसेस होते होंगे जो फ्लैश होते ही नहीं है, किसी को बताया ही नहीं जाता है, वो दबा दिया जाता है, लड़कियां भी चुप हो जाती हैं, पेरेंट्स भी डर के चुप हो जाते हैं। तो क्या हमें मतलब क्या जागरूकता का आज ये स्तर है क्या? हमें सबको डोर टू डोर बताना है बच्चों को हमारे, तो कहाँ से हमें शुरू करना है, इसके बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना है। तो अभी दीदी ने एक जो बताया कि हमें क्या कोर्स कॉलेज में कोर्स देना है उसके, या हमें इतना लेट करना है, उसके पहले ही हमें शुरू कर देना है, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा दीदी, क्योंकि बहुत सारे जी, अभी तो बिल्कुल। ये श्रद्धा के वजह से ये सब हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ में हमें बहुत उन्होंने सेफ रखा, हमारी लड़कियों को हमें बहुत सेफ रखना है ना? मतलब अगर हम लोग आज बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो अगले जनरेशन के लिए ये काफी ये रहेगा, डेंजरस स्थिति हो जाएगी। लड़कियां समझ नहीं रही हैं क्या दीदी बात को, या उन्हें कैसे समझाएं इसके बारे में, या उन्हें किस तरह से गाइडेंस मिले, इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हमारे अभी जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग उन्हें भी पता चलेगा। तो प्लीज आप उन्हें उस बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू दीदी, मैं तो हूँ ही, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी कुछ दादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा उनको कनेक्ट करें वरना वो लोग निकल जाते हैं, लेफ्ट हो लेते हैं। आई विल रिक्वेस्ट सुंदर रेड्डी दादा to please contribute your opinion, Dada. Your opinion is very much precious to us, so please say something about this. Sundar Reddy Dada, it is my request, humble request, so please say something on this topic. Dada, you are muted. Welcome to our forum, Dada. I think you are first time attending this to all meeting. the participants. Am I heard here? Now here you can Yes, hear Dada. me, you can listen. Yes, Dada, I can listen you, and your video is also very good. Okay. I only have to say if you, something which is little academic kind of a thing.
So, in fact, if you ask me a direct question as to what is your what would the answer to this, the issue that you have raised today, I can only say that I do not know. I don't know. I thought I in fact was trying to say I don't know. So that Now, is the one. one Because question is arised here. Didi is asking, should any training be started for the girls to protect themselves? What is your opinion on this question? Can you say something? I'll tell you something which I do not know whether it directly answers what you are trying to ask me. But however, let me go proceed. The thing is that there is something called, today the world is changing in one way. That is the frequency and intensity of stimuli. We're able to get my point. The frequency Yes, and yes, intensity of stimuli, let us say about 100 years ago, or let us say 70 years ago, 1950. We'll call this stimuli as noise. The noise means a noise that disturbs you or something. So the stimuli, level of stimuli, let us say in 1950 or 1960, was very, very low. You see, you had, when I used to go to village and they used to say, now very few people were said that we have seen the city. The travel was not there. They used to live in the village, and they had no opportunity to go to the city. So they were in a what do you call a rural atmosphere, where they did not have any, let us say, even the art, culture, or cinema, or radio, or whatever it is. Even they were also not familiar with that kind of thing. See, now what has happened in the last 50 years is that this noise level has increased. When I'm talking about what noise level means, that is the stimuli. The frequency and intensity of the stimuli volume has increased so much. Today, we live in a world of 24 into 7. Have everything. So 24 into 7, you have got visuals, a virtual world, a digital world, music. Millions of songs are given to you free. They will say that your millions of songs are waiting for you to listen. So like that. So now the stimuli level or noise level has increased to a crescendo, or you can say kind of a tsunami has come. So which was not there. Now you see, we are all the same human beings. Let us 70 years ago, we were also same kind of a structure, the biopsychic structure. The same biostructure, the biopsychic structure of the human being is now subjected to 100 times noise, which was there, let us say 100 years back. They were not exposed to the kind of intensity and frequency of the stimuli as the people who are subjected today. The children, or we can say children, growing up people now. So what there is a now, what is then what does it point out? It points out that if you want to have, how to reduce this noise? Noise in the sense that how it does it stimuli, what you call, gets assimilated or digested by the human being, which he is now subjected to, which is quite high today compared to what it was there, let us say 70 years ago, 60 years ago, and all that. Because the TV came, I remember in 1980 or 81, something like that. So we did not have all these things, like there was only one channel, black and white channel, DD. So that was in 1980. So I remember when I went to the bank first time in 1980, I was given a calculator. One calculator was given for me to work with. So now today we have got so much of computers, screens, so many screens are there which you have to watch. So the amount of hammering the nervous system of the individuals today is subjected to is extraordinary. It is far higher than. So are we now, in other words, our nervous system has not refined itself, or it has not become so subtle
has to digest, assimilate these stimuli and keep the balance. So in other words, we require a kind of a psychological theory. We require sadhana, we require yoga, we require meditation, and we require an understanding of humanities. See, one more thing also has happened during this period of, they call it globalization. Let us say 1980 to 2010, we had such a craze for professional courses that students, the people, they were told, if you want to study geography, you want to study history, you want to study social sciences, if you want to study art, culture, or you want to go for art subjects, that you want to go for BA instead of going for a BSc, they said, no, people who don't get admission into engineering, admission into medicine, they go for going for what you call art subjects or something like that. So it is a neglected. So in other words, the training of mind, the knowledge that we require about our society, our thinking, our ideas, evolution, all these things were totally ignored. People have become robotic, mechanical. So this kind of culture has become so rampant today that we have forgotten the stabilizing cultural practices, stabilizing cultural modes of thinking, culture, all those things are there. So now if you want to bring back, that means you have to bring back humanities as subjects of study in the schools very intensively. And we should, people should understand biology, they should understand psychology, they should understand aesthetics, they should understand mysticism, they should understand all these things. So this is very much required today. So what I want to say is that we have to training our minds to meet the pressures, the psychological pressures, or the attack on your nervous system, to cope up with the attack on your nervous system by so many wide range of stimuli and also their intensity and frequency. You have to nurture. You have to nurture our mind. We have to cultivate our mind. So the mental cultivation of mind, understanding psychology, understanding spirituality, understanding history, understanding languages, understanding all these things are very much pertinent and important today. If you want to survive in this, what we call greed-driven and competition-driven world. So this competition of trying to look better, competition of looking to see ego, the ego, what aham bolte, ego bolte. So it is all promoting kind of ego and competition and this kind of culture. So if you want to, that, so what I only say is that meditation, yoga are the culture of the 21st century. The Tantra culture will dominate the 21st century. So, and also we are slowly becoming, when I say that you have to concentrate on humanities, see why I am saying is that because already the work, the corporal kind of work, now all these things we are not going to have jobs. It's a workless world. Actually, we are moving to a world where there is no work, there is no employment. So the important thing is now leisure management. How does a person spend his leisure? Today, I can see it 10 years back, the generation was such that they are afraid of retirement. They are afraid of leisure. They say, what do I do? If I don't have a work to do at my home, after you are retiring me, what should I do? I'll go mad. So that was a kind of a culture. Now here, what I'm saying is that we have to, the culture of leisure. We now have to promote the culture of leisure. How you spend your leisure and how you, develop your abilities in both mental as well as physical, mental and spiritual potentialities. That has to be cultivated and they have to be. Then only, that is the only way you can be balanced, happy in today's cutthroat world.
Thank you, Dada. Thank you so much. Namaskar. नमस्कार दादा. बिट्टू दादा इज आस्किंग हु इज श्रद्धा. श्रद्धा एक लड़की थी दादा जिसका कि उसके लिव इन पार्टनर जो उसके साथ उसका पार्टनर रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में, उसको मार करके उसके कई एक टुकड़े कर दिया था और उसके सर को अपने फ्रिज में रखे हुए था. ये बड़ा ही अभी हाईलाइटेड केस है. शायद आपने इस केस को नहीं रीड किया इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं. कोई बात नहीं है, आज यहाँ से आप इसके बारे में डिटेल में जान कर जाएंगे. I tried to say in the beginning. As I tried to say in the beginning, I don't know because it is really beyond my it is really only psychologists can explain as to why. See, everybody is having the same bundle of vrittis, same bundle of choices, but somebody makes a wiser choices, somebody doesn't make a wiser choices, and somebody is happy to be why somebody is happy to be violent, aggressive, and all those things. So because that was definitely a psycho case, Dada. We cannot ignore that. They have some problems, but this should not occur in our society. Now, as I told you that unless we focus on psychology, the studies of humanities, more and more studies of humanities, you are absolutely right. You have to value culture, literature. We have to value culture, literature, sports. Okay, Dada, some more are trying to speak, Dada. So I will let them to Thank speak, you. Dada. Namaskar. Okay. Namaskar, Dada. Thank you. Please stay tuned. If your terms come later, I will ask you some questions also. Now, the one thing that leisure management Dada is saying, yes, that is definitely very right thing. Now people have so much abundance of time. Then how to manage that time? What to do in that time? We will have to make a course for that. They should do yoga. They should do sadhanas practices. We should promote these things. Now Amrita is raising her hand she's waiting for long back. Please, Amrita, I will ask you to say something on this topic. You are welcome to our forum. Amrita. जी दीदी नमस्कार, सभी को नमस्कार. नमस्कार दीदी, मेरी एक बस रिक्वेस्ट थी आपसे, इसलिए मैंने हैंड्स रेज किया है. जो रेड्डी दादाजी ने जो एक्सप्लेन किया, दिस इज एक्यूरेट पॉइंट. वो मतलब सटीक पॉइंट है और मैं भी अगर आगे बोलती तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को बोलती. बस रिक्वेस्ट आपसे ये थी ना कि ये जितने भी लोग जुड़े हैं इस फोरम में, उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश को मतलब ठीक है, इंग्लिश आती है सबको, लेकिन लैंग्वेजेस की है ना इश्यूज हमारे कंट्री में है ही बहुत सारे लोग. तो बहुत से लोगों को वो जितना, क्योंकि दादा का पॉइंट इतना टेक्निकल था कि उसको समझने के लिए तो और ज्यादा कान खड़ा करना पड़ेगा. मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. तो इस तरह का पॉइंट ना आप हिंदी में भी शॉर्ट में, उतना टाइम लेके नहीं, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, तो जिन लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है इतनी डीप चीजों को समझने में, तो वो बहुत इजीली समझ, क्योंकि अपनी बाबा बोले ना, अपनी भाषा में इंसान इजीली कनेक्ट अच्छे से समझ जाता है. बस यही कहना था दीदी कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में ना, तो बाकी लोग भी और अच्छे से समझ जाएंगे. और आगे का कुछ और पॉइंट ऐड करना है वो मैं बाद में कर दूंगी, बाद में. जी दीदी, थैंक यू. दीदी, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी. क्या अपने पास वो एक फैसिलिटी आती है कि आप अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो वो हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाई देता है, और अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाई देता है. बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, बट काफी कुछ उसमें सही पता चल जाता है. अच्छा दीदी, शायद आप ये कह रही हैं कि वो ऑप्शन इसमें होता है. ऑप्शन होता है, आई एम नॉट टू श्योर जूम में, लेकिन होता है. इवन जूम में भी होता है आई थिंक, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेजेस, तो होता है. हाँ, तो वो ऑप्शन अगर सबको पता चल जाएगा तो हाँ ठीक है. अनुभूति दीदी बता रही हैं शायद कि वो ऑप्शन है.
प्लीज दीदी सबको गाइड कर दीजिए कि जैसे अगर कोई दूसरा इंसान ना समझ पाए तो वो No, I think that option is only available for host. Yeah. दादा यहाँ मीरा दीदी होस्ट हैं, वो देख लेंगे इस चीज को, आता है ट्रांसक्रिप्ट का। सो अगली मीटिंग से हम लोग कोशिश करेंगे उसको करने का। और सुंदर यदि दादा की बातों को ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी मैं 2 लाइन में वो बताना चाहूंगी जो लोग बिल्कुल भी अगर इंग्लिश नहीं समझ रहे हो उनके लिए, कि वो कह रहे हैं कि आज से मतलब 70 के दशक की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा चीजें नहीं थी जिसको हम देख पाते थे। अभी टीवी है, सिनेमा है और बहुत तरह के एक्सपोजर्स जो हैं, जो हमारे माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हमको उस तरह प्रेरित कर रहे हैं। ये सब चीजें पहले नहीं थी। अब गलत चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं, परोसी जा रही हैं, उनसे हम कैसे बचें। और अभी बेरोजगारी इतनी है कि लोगों के पास खाली समय बहुत ज्यादा है। उस खाली समय का मैनेजमेंट कैसे कराया जाए ताकि लोग गलत चीजों को न सेलेक्ट करके सही चीजों को सेलेक्ट करने में एबल हो सके, और उस दिशा में हम उनके उस खाली समय का कैसे सदुपयोग कराएं। निश्चित रूप से अगर ये कहावत है हिंदी में कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर उस खाली समय को हम अच्छे काम में लगाएं, योगा में लगाएं, साधना में लगाएं, अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस में लगाएं या कुछ सोशल सर्विस में लगाएं, तो शायद आपकी आवाज कट गई दीदी, आप म्यूट हो गई हैं। आई थिंक नेटवर्क इशू है। Anyone have any problem? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, नहीं आ रही थी दीदी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। Your voice was bit feeble. Now it is fine, दीदी। दादा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ठीक है? अभी ठीक है, पिछला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। दीदी तो वो मैं यही बता रही थी कि जो चीजें आजकल बाहर दिखाई जा रही हैं, जिससे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या हमारे बच्चे या न्यू जनरेशन हो जा रहा है। आजकल तो लोग सिनेमा देख करके कि मर्डर कैसे करना है और उसके बाद उसके एविडेंस को कैसे छिपाना है, उसके साक्ष्य को कैसे छिपाना है, बॉडी को फ्रिज में रखना है, ये सब भी बच्चे सिनेमा देख करके सीख रहे हैं। ये जो Poonam Didi, it seems your Wi-Fi is weak. फ्रिज में डेड बॉडी को रख दिया गया है, तो बच्चे फिर बर्फ के खाली में बचा है। हेलो, Yes, Didi, now it's okay. You can continue. if someone can continue, it will be more better because my network is not good. Veena Hari Didi want to say something. Allow her to Yeah. speak. Dada, I've been listening, and I think we know the problem. We know there's violence. It's all over the world. And we know even the most educated girls are trapped in there. And I think we need to put our minds together now and find the solution. What is the first step we can all do so that at least we can stop from now onwards? Let's not look at the back and see what our parents or grandparents or uncles or whatever was doing. Let's go from now onwards. Let's look at the society. Many people are more educated. So should we start this education from the beginning
in the primary, elementary, tell the women, tell the little girls, your body is sacred, and don't let anybody take advantage of you, and then go on from there. Every year they have a little portion of moral education where boys and girls are taught maybe to respect each other and not hit, not use the violence. And up to the college, what happens when you're married, how to avoid the scene. I think if we can somehow, and what are the sources we have in case, I won't go complain and everybody in the world knows that I was hit and, I'm the one ridiculed rather than the person who hit me. The person is not easily going to be going to the source to get help. So as a society, what are we going to do from now onwards so we can stop right where it is now and not let it go farther than like this lady's case, when the person cut her and put in the fridge. It's like a psycho movie, actually. There's a movie in English, very much like that, So how can we stop this? I think we need to put our brains together for the solution. We know the problem. And thank you very much, Dada, for giving me a moment to talk. Thank you. You are always Thank you welcome, very Didi. much, Didi. Yeah, me too, Sorry, Didi. पूनम If you दीदी, want, हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए. नहीं आप कंटिन्यू कीजिए. आई थॉट कि वो आपका नेटवर्क इशू है. Okay, thank you, Didi, for your kind cooperation. I will request Prabha Agarwal, Didi. She is raising her hand. So please, Didi, you may continue. Namaskar to everybody. While our earlier speaker was talking about a solution, something came into my mind which I have always spoken with many other people, and that is that when there has to be a group of say good-minded people or people who are sensitive, conscious, and who can relate to the other person. Let us have a group or a helpline kind of a thing where anybody can call us and discuss things with us about all these kind of things. Maybe the girls are not able to discuss it with their family, with friends, but they may want to discuss it with somebody else. So I think if we have a helpline or something, people may call up and take help. Yeah, Didi, That's sure, my Didi. We will try to do that. First of all, we will have to be united so that we can spare time for that. Thank you so much, Didi. Now I will request Josna. Josna, Didi, if you want to say something, then please unmute yourself. Yes. As a solution, I would like to say that every problem has its roots. So the root is that student and the parents have a gap of talking, of sharing thoughts. In India, there is a culture of that not sharing everything to your parents, and even parents don't have that much information that your girl having how much female friends or how much male friends. So I wanted to remove this gap, that there must be no space between parents and the children, that they must be able to contact with their parent, that I have that much friend and I like that one, or I don't like, I am feeling fear from him or her, or I have something doubt to him, can you suggest me anything? First point is this. And second, as Dada had said very well, that our brain work in a pattern. So the thing we watch, it replays in our mind, and then we started to think on that, and after that we have a curiosity to do that work. So it is very true that video are more give impact on our mind than anything we read. So this Bollywood
playing a very wrong effect on our children, our society, and even it has, according to me, 90% of degradation of Indian culture is because of the Bollywood. So to remove from this, parents must make their children understand being a friend, not being rude as a normal parents of are India in India. So being a friend, they must have to understand, and bringing them their child in spiritual part, because it is a childhood. In India it is said that when we get old, then we have worship and all these type of spiritual activity we will follow. This is first of all wrong thing. As Baba had said, from childhood we have to give our children engaged in spiritual practices. From childhood they must have to follow sadhana and everything. And as Baba has given yam niyam and 16 points, so we have to follow. Yoga gives, if through yoga we can control our mind, our body, our hormones. So that's why the children are not going on wrong path following these points. Thank you. Thank you so much, Jyotsna. Now I will request Srija Didi. She is raising her hand. Srija Didi. Srija Didi, are you there? Yes, Didi. Yeah. Jyotsna Yeah, has please hit continue. she has hit the nail on the head. Exactly. And she has said it. So it means a lot. The age which is really, calling for it is absolutely right. And, She snatched your they are words, the, Didi. sorry? She snatched your words. Yeah, she has taken it from, from the inputs she's got, but she's got it really right. She's got it really right, and she said it really right. And this is the need of the children today. So where do they get that? Where do they get that help? Yes, parenting has to change, but it takes a long time, to get everyone on the track of doing it, because everybody has their own issues to handle, and changing the parenting structure immediately, it may not be possible, but at least among Margis, I would say, as Baba has always said, model societies, it should happen. To set up, to make the model society visible, that could be the first step, because we could easily communicate with every Margi, because we have our contacts, right? So we have our network. And, once the Margi, we have a huge population, of course, once the Margi population, starts seeing that change, and the children, we see the children practicing. The problem is the children, are really not fully into it. They are into it, but they have, they feel the problem like they are under so much pressure. So what does that mean? They're also, they're not enjoying sadhana. Okay, the leisure should go into it. That's what we are talking. So they should be enjoying sadhana. They should not feel like sadhana is a like it's pressure. No, they should not feel I don't have the time. They should feel I have the time, I want to do it. That should be the way that they should be doing sadhana. Okay, if they have to enjoy it, and we really know once you get there, it is the highest enjoyment that you can have. And why is it that our children are not able to get there? Because probably they're not really guided, how to enjoy it. So that might be the start, for us to have that model society visible. Okay, and along with that, because once that child is successful, that when the child says it to her peers, okay, peer group is very influential today. Okay, when that peer group is able to talk, the voice is heard. It's much easier for your friend to talk to you. You should make friends with those, and your friends should be able to approach you. Your friends should be able to know how to present it to the parents, because if your parent changes, then for the youth, I was just listening to one video where it is said that it's easier for the youth to change
Okay, because they're already changing. They are ready to change anytime. So if we can address the youth themselves and they making the change to the parent instead of the parent making the change, but a parent is already 40 plus. Okay, so for the 40-50-year-old to change, the entire setup may be, a little difficult. Instead of that, why don't we go on the reverse? Have the youth directly addressed, because they are the ones who really need this, and they will make the future also, and they can help their parents. They know how to present it. At least 10% of our Magi population are able to present it accordingly. Our children are able to. They will talk to their peers. And the peer group is the most influential. I'm telling you, even old or young, we are the most influential. If our similar age group is saying it, we listen. Because we know, okay, they understand. Okay, if there's a generation gap, it's difficult to take it because if we feel, oh, you don't know that, you don't know this. Okay, so why don't we address it in that manner so that it is taken much, because they know what they are on. Okay, and they can ask you questions. They can come forward with what they want. And if we could make it a discussion format, and like exactly what the Prabha Didi was saying, if we could bring in a trust with certain groups being created in different samajans, okay, we could focus samaj wise, because a language shouldn't be a problem thereafter. Anybody can get to that group once that, and we are pan India, we are pan world. Okay, so the message to spread may take much time. That tantra is the next, like exactly what Surendra Dada was saying. Tantra is the next, and everybody knows, yoga, how it works on the mind, how it works on the physic, how it works on the society. So we just have to, brush it on the exact. We have to hit the nail on the head. Okay, and that is possible. Thank you, Srijata Didi. Yes. We have limitation of time. Many are raising their hands. I'm yes, sorry to interrupt you. Let's Thank you so much, Didi, for your precious words. Thank you. Now, Bittu Dada is waiting for a long back. Bittu Dada, I request you to say few words. दीदी नमस्कार. नमस्कार. दीदी 3 बात बोलूंगा. जी बोला जाए. जी 2 बात तो मैं यहाँ के पार्टिसिपेंट्स जो मैं सुना हूँ उसके लेके बोलूंगा, और एक बात अभी की परिस्थिति को अपने जीवन में मैंने कैसे बिताया है उसको मैं बोलूंगा. जी दादा, ब्रीफ में करेंगे दादा, क्योंकि हमारा टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन होता है. बोले आप. जी. आनंद जोशना जी कह रही थी बॉलीवुड को वो दोष दे रही थी. मैं जहां तक समझ सकता हूं कि आनंद जोशना जी जरूर ही नाम से वो तो मुझे बिहार की ही लगती हैं. जी. तो आनंद जोशना जी को देखना पड़ेगा कि बिहार में क्या अश्लीलता फैली हुई है और झारखंड में क्या अश्लीलता फैली हुई है. अगर यहाँ के गानों को देखेंगे, आप यहाँ के वीडियोस को देखेंगे, तो ऐसी वीडियोस और ऐसे गाने होती हैं जो हम अपने बच्चों के साथ एक माँ बाप कभी देख ही नहीं सकता. ये बिहार की असलियत है और ये अश्लीलता है बिहार की. बॉलीवुड तो सिर्फ एक बहाना बन गया है. ये जो ऑनलाइन गंदे वीडियोस चलते हैं उनका क्या, वो सभी के सभी दोषी हैं समाज को गंदा करने के लिए. बॉलीवुड सिर्फ एक बहाना है. सबके मुंह में बॉलीवुड बैठ गया है, लेकिन असली गंदगी तो हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में है. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात, श्रीजा दीदी कहती हैं कि मनुष्य को जो है कि साधना में इंटरेस्ट होना चाहिए. मुझे याद है जब मैं एमसीए करने के लिए 2017 में गया था और जब मैं पहली बार अपने सब्जेक्ट में फेल कर गया था, जब मैंने पढ़ाई करके मैंने एग्जाम दिया तो मुझे यूनिट टेस्ट में 50 में से 49 नंबर आए. मुझे एक चस्का लग गया कि मुझे नंबर लाने हैं, मुझे फर्स्ट करना है. तो जब तक ये चस्का नहीं लगेगा, जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप साधना नहीं कर सकती, तब तक कीर्तन नहीं कर सकती हैं. तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप उस पथ पे जो है कि जबरदस्ती नहीं बैठ सकते हैं. इम्पॉसिबल है, जबरदस्ती नहीं बैठ सकते आप. और ये सेल्फ रियलाइजेशन भी आनंद मूर्ति ही करवाते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका संस्कार होता है वैसा होने का.
आप जबरदस्ती, यू कैन नॉट डू जबरदस्ती। तीसरा बात मैं बोलना चाहूंगा दीदी कि मैं अपना एक छोटा सा बात बोलूंगा, मैं अब खत्म ही करने वाला, 2 मिनट और बोलूंगा। जब मैं 2010 की बात है, जब मैं 2010 में था, अपने हजारीबाग में रहता था, उस समय मैं सिगरेट, गांजा, बीड़ी, गुटखा, खैनी, पान मसाला सब कुछ खाता पीता था। उस समय का बिट्टू और आज का बिट्टू में आसमान जमीन का अंतर है। आज का बिट्टू टीसीएस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों टाइम साधना करने वाला, तीनों टाइम और एवरी टाइम कीर्तन करने वाला। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस समय मैं अपने घर में था, जब मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, वहां का एक परिवेश था, जिस परिवेश में आके मैं बिगड़ गया था। लेकिन जब मेरा परिवेश हमको अच्छा मिला तो मैं अच्छा बन गया। कहने का अर्थ ये है दीदी कि अपने घर में अगर हम सभी लोग कीर्तन, पूजा पाठ, पंजन अगर अच्छे से करेंगे तो हमारे घर के जो बाल बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, वो सभी लोग सही पथ पर चलेंगे। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत सही बातें कही हैं। ये तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में फील करते ही हैं कि जब तक इनर इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं किया जा सकता, फिर भी एक माहौल हम बना सकते हैं। अगर हम जो भी मॉरलिस्ट हैं, अगर यूनाइट होकर के बनाए माहौल, तो वो और तेजी से बनता है, और हम उसी का प्रयास कर रहे हैं दादा। और हमारे पास बीनू दीदी हैं, बीनू श्रीवास्तव दीदी हैंड रेस की हुई है। दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार पूनम दीदी। नमस्कार दीदी। सभी लोगों को नमस्कार। मैं सबका सुन रही थी। बीना हरी दीदी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि आज जो वायलेंस के खिलाफ बहुत सारा वायलेंस होता है, घर में भी होता है, पति भी करता है, और महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, आवाज नहीं उठा पाती हैं, और ये बिल्कुल सही ही बात है। और लिविंग इन रिलेशनशिप का जो आजकल बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियां अगर उनको ये चीज बचपन से, हमको लगता है, या तो सिखाया नहीं जाता है, और आजकल जो मोबाइल का जो रिचार्ज हो गया है, मोबाइल जो चलाने का जो चस्का हो गया है, और लड़कों से जो ये सब चीजें पाने के लिए इस तरह का जो कदम उठाती हैं लड़कियां, ये बहुत सारा जो है, ये समाज में जो है बहुत ही ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। और कहीं ना कहीं इसके लिए कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बाकी भी जो गर्ल्स हैं, वो कहीं ना कहीं गर्ल्स स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं जो है। और अगर हमारी लड़कियां खुद उस चीज को अगर गलत माने, तो ये चीजें अब पहले के जमाने में ये चीजें होती थी, लेकिन इस तरह से नहीं होती थी जो है। और जो आजकल जो फेसबुक पे जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे जो रील्स बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारे उत्तरदायी हैं जो है। और साधना, पूजा, ये सब तो अगर हमारे बड़े नहीं करते, जैसा बिट्टू दादा ने बताया, तो हमारे बड़े ही नहीं कर रहे हैं, जो 40+ हैं, अगर वही नहीं कर रहे हैं घर में, और वही इस चीज में भटके हुए हैं मोबाइल लेकर के, तो हमारे बच्चियां तो बिल्कुल नहीं करेंगी जो है। और कॉलेज गोइंग गर्ल्स कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको निश्चित रूप से हर चीज चाहिए, मोबाइल चाहिए, और फ्रीडम चाहिए बहुत ज्यादा जो है। और इतना भयानक रूप ले चुका है कि, और कॉलेज गोइंग गर्ल्स तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप भी बिगाड़ चुकी हैं, और ऐसा रिलेशन समाज में हो चुका है दीदी कि उसके लिए बहुत सारा परिवार डूब चुका है जो है। इसको धरातल पर अगर देखा जाए, तो धरातल से अगर इसको उठाया जाए तो इसको लाने में बहुत वक्त लग जाएगा। और अगर इसको पूरी तरह से, अगर जैसे मोदी जी, योगी जी जिस चीज को बोलते हैं, अगर एक जिम्मेदार पर्सन इस चीज को अगर बोले अपने मंच से, लड़कियों को सुधारने के लिए, लड़कियों को जो फ्रीडम मिल गया है कि उनको जो कानून उनको जो मिला है कि बहुत उनके लिए सख्त बन रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं लड़कियां फायदा भी उठा रही हैं। तो उनके लिए कि हमारे लिए तो इतना सारा कानून बन गया है, तो वो झूठ मूठ का भी लड़कों को फंसाती हैं। और
अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल भी करती हैं, और उसके बाद से उनको जब उनका गलत वक्त आता है तो उसको जो है कि ले जाकर के फंसा भी देती हैं जो है। तो लड़कियों को जो आजादी मिली है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और लड़कियों को जो ये जो कानूनी रूप से जो उनको मिला है कि हाँ अगर कुछ भी करेंगे तो उनको जो है कि निश्चित रूप से उसको देखा जाएगा। तरह तरह की चीजें हुई हैं लड़कियों के खिलाफ गलत, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए लड़कियां दीदी ज्यादा जिम्मेदार है समाज में। अच्छा हम तो दीदी, लड़कियों को धन्यवाद। धन्यवाद आपका दीदी, आपकी पॉइंट्स को हम लोग समझ गए। आपने जो आप जो कहना चाह रही हैं वो हमारे जो भी श्रोतागण हैं वो सब उस बातों को समझ रहे हैं दीदी। अभी व्यंजना दीदी हैंड रेस की हुई, आप बने रहें दीदी। आपने भी बहुत अपनी बातों को स्वतंत्रता के साथ रखना बहुत अच्छी बात है, और आपने जो भी कही मैं उसका स्वागत करती हूँ, और अभी मैं इस पे विशेष कमेंट नहीं दूंगी। अभी व्यंजना दीदी हैंड रेस की हुई है, जरा उनको सुनते हैं हम लोग वो क्या कहना चाहती हैं। और भी लड़कियां हैं जो आपका जवाब देने के लिए शायद हैंड रेस की है, मैं उनसे बाद में देखती हूँ। व्यंजना दीदी, आई विल रिक्वेस्ट यू। जी नमस्कार सभी। या दीदी आपका स्वागत है। सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक वास्तव में है क्या, हम लोग को ये समझना होगा। कोई बैलेंस केस हो रहा है या कोई किसी का रिलेशनशिप में जा रहा है या समाज में महिलाओं के साथ हो रहा है, पुरुषों के साथ हो रहा है, कुछ जो भी केस हो रहे हैं। दीदी आप नेटवर्क एरिया में आइए, आपका आवाज बहुत क्रैक कर रहा है। अभी आ रही है दीदी बात? जी अभी ठीक है, बोलिए। हम लोग तो दोस्त दे देते हैं कि ओके बोलिए बोलिए बोलिए, देखिए आ रही बोलिए। किसी दूसरे को हम लोग दूसरे को दोस्त दे देते हैं, सब कुछ होता है। आखिर ये सब करके कौन रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी बेटी या हमारा बेटा, हमारा पति आखिर कर रहा है हम ही लोग। तो हम लोग कब कर रहे हैं? जब हमारी वो जो नैतिक शिक्षा जो कि गर्व से देनी चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम दोषी हैं। हमारी बच्चियां इसलिए दोषी है, हमारे बेटे इसलिए दोषी है क्योंकि हमने उसको गर्व से ज्ञान नहीं दिया, हम अध्यात्म में नहीं डूबे थे, हम पूरे 9 महीना तक। उसके बाद जब आया शिशु बाहर तो भी हम दुनिया में डूबे हुए थे। वास्तव में एक सुंदर माहौल अपने बच्चों को नहीं दिए, जो उस समय एक बहुत सुंदर मन को वो हम नहीं दे पाए बच्चों को, और वही बच्चे बड़े होकर के बिगड़ते हैं। आजादी बच्चों को नहीं बिगाड़ती, आजादी तो एक रास्ता दिखाती है। वो एक नई दिशा में उड़ना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। अगर हम उसको पहले से अच्छा संस्कार दिए रहते तो हम अच्छे माहौल में जाइए, सीरियल के बहुत गलत गलत सीन को देखा। अब वैसा ही तो मानसिकता हमारी हम नहीं हो रहे, हमारी शिशु हो रही है। अब बच्चा जब बाहर आया तो उसको आपकी आवाज आप प्लीज क्षमा करें, आप कुछ लिख करके अगर चैट में बॉक्स में डाल दें तो लोग उसको रीड कर लेंगे। ऐसी आपकी बातों को हम लोग जहां तक समझ पाए हैं, आपका कहना है कि बच्चे का जो संस्कार होता है वो उसके बचपन माँ के गर्भ से ही उसमें आना शुरू हो जाता है, और हमें वहीं से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे हमारे समाज में नैतिकवान बच्चे पैदा ही लें, ताकि उनपे मतलब एक्स्ट्रा जो बचपन से जो संस्कार आते हैं, जो उनका माइंड बन रहा होता है, जब बॉडी तैयार हो रही होती है, उस वक्त उसकी माँ जो है वो साधना करे और वो हमेशा पॉजिटिव सोच में रहे, ताकि जो बच्चा जन्म ले वो एक अच्छा नागरिक पैदा हो, एक अच्छा साधक पैदा हो और समाज में उसका एक अच्छा योगदान हो। नाउ आई विल रिक्वेस्ट लोकेश कुमार दादा टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक। लोकेश दादा, लोकेश कुमार, आर यू लिसनिंग मी? हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी दादा, बोला जाए। हाँ दीदी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है?
नमस्कार दादा जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही दीदी है। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हाँ दीदी मेरी, जी जी, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ दीदी, नमस्कार सभी दीदी दादाओं को नमस्कार। बहुत अच्छा दीदी आप लोगों ने ये टॉपिक चुना है, और पहले भी इस तरह के टॉपिक आप लोगों ने चुने हैं, और समाज में इससे बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है। हम लोग भी कुछ कर सकते हैं जो इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर। तो इसमें अभी जैसे जितने भी लोगों ने, जितनी दीदियों ने ये बात कहा, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कल समस्या है। इस प्रैक्टिकल समस्या के लिए क्या है कि प्रैक्टिकल ही कुछ हमारा टीम वर्क होना चाहिए। जैसे कि क्या है कि हमारे कुछ जैसे एक्सपर्ट है, तो उन एक्सपर्ट की कुछ टीम होनी चाहिए जो इस पहलुओं पे काम करे। जैसे कि क्या है कि जैसे गर्भ संस्कार का विषय हुआ, वैदिक मतलब आध्यात्मिक पेरेंटिंग का विषय हुआ, और अलग अलग जैसे कि मान लीजिए कन्याएं हैं या लड़के हैं, तो उनके लिए प्रशिक्षण का जैसे गुरुकुल परंपरा में हमारे क्या होता था, कुछ कलाएं होती थी। लड़कियों के लिए 64 कलाएं और लड़कों के लिए 72 कलाएं। तो इस प्रकार से जो 64 कलाएं थी, उन कलाओं में इतना समन्वय, इतनी चीजें थी कि लड़की को या लड़के को आगे इधर उधर उसका माइंड नहीं जाता था, वो पूरा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था। तो पर अब वो कैसे होंगी? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इन चीजों के लिए क्या है कि एक पूरा प्रॉपर प्रशिक्षक की जरूरत है, जो अलग अलग जगह पर उन चीजों का प्रशिक्षण दें। तो इसके लिए एक आदमी, यानी मान लीजिए हमारे भारत में कोई एक प्रशिक्षक है, तो वो सब जगह नहीं कर सकता। इसके ज्यादा से ज्यादा आचार्य तैयार हों। वो आचार्य चाहे ऑनलाइन, जैसे व्यंजना दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस विषय पे, इसी प्रकार से बहुत सारे कुछ हम भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा। तो उस तरह से ऑनलाइन बहुत सारा वर्क इसमें हो सकता है, जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे कवर करता है। लेकिन इसके ज्यादा से ज्यादा हम प्रशिक्षक तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो स्कूलों में, अलग अलग महिलाओं के जैसे ग्रुपों में, किटी पार्टियों में, और स्वास्थ्य कथा के साथ में इसको भी हम बताएंगे, तो उनके बीच में तैयार होंगे और बच्चों को ये सब मैसेज मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कुछ माएँ हैं, अब बच्चा जैसे प्ले ग्रुप में स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाता है, तो अधिकतर माँओं को ये रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल चला जाए और उसके बाद मेरा जो प्रयास है वो खत्म हो गया, मेरा प्रयास उसे स्कूल भेजने तक का था। लेकिन इसमें हम उन्हें ये गाइड कर सकते हैं, प्रशिक्षक उन्हें ये गाइड कर सकते हैं कि आपकी भूमिका पूरी है वहाँ पर। स्कूल में तो आप मजबूरी में उसे भेज रहे हो, वरना आप ही की भूमिका है। और वो आपकी भूमिका कैसे है? पिता की अनुशासन के लिए और माँ की मातृत्व के लिए है 5 साल तक। और उन अनुशासन और मातृत्व में किस प्रकार से समन्वय बिठाना है, कौन कहानी, कथा, कहानी, खेल और गाना, इसका किस प्रकार से उसको शिक्षा देनी है, कैसे उसमें हमें आध्यात्मिक चीजों का पुट करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। यदि ये हमारे पास मैटर नहीं होगा, डाटा नहीं होगा, तो हम कहते रहेंगे कि ये समस्या है, ये समस्या है। लेकिन उस समस्या के लिए प्रॉपर एक शेड्यूल की जरूरत होती है, प्रॉपर एक सिस्टम की जरूरत होती है। तो उस सिस्टम को फॉलो कराने के लिए बहुत अच्छे से टीम की जरूरत है। तो वो टीम का जी दादा, हम बहुत बढ़ाएं। दादा, मैं आपको मेरे यहाँ पास इस रोकना प्रकार चाहती का हूँ। डाटा है और मैं इस टीम पे भी काम कर रहा जी हूँ। दादा, तो मैं कभी आपकी भी अब बातों को मेरी समझ आवश्यकता गई हो दादा। तो हाँ जी दादा, जी हम जी लोग जरूर आपको अलग से कांटेक्ट करेंगे दादा। लेकिन अभी हमारे पास बहुत से गेस्ट हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। और बहुत से लोगों ने हैंड रेज कर रखा है दादा, इसलिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। जी जी, मैंने बहुत कह दिया, टाइम ले लिया, धन्यवाद। नहीं नहीं दादा, आप सबका ये मंच है, आप सब लोग हमेशा आए, आमंत्रित हैं। लेकिन मेरा मतलब मेरी ड्यूटी है, अभी 15 मिनट समय है, इसमें मुझे सबको लेना है। अभी अनुज देव दादा हैंड रेज किए हैं, प्लीज दादा आप अपनी बातों को 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे। दादा यू आर वेलकम। नमस्कार दीदी। सबसे मेरा जो ओपिनियन है इसमें कि जो वेस्टर्न कल्चर है
उसके वजह से ऐसे घटना हो रहा है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है, कभी भी भारत का एक कल्चर नहीं आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, उसके वजह से। दूसरा, इसमें लीडर भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अलग अलग रिलीजियस में वो घृणा फैला रहे हैं, उसका वजह जो है आम जनता भुगत रही है, और हमारे जो बहन बेटी है वो उसको भुगतना पड़ा है। दूसरा, एक जो एकाकी परिवार है, ज्वाइंट फैमिली हमारा भारत का संस्कार था, जो इसमें एकाकी परिवार है, एक पर्सनल अपने हस्बैंड वाइफ, उसकी वजह से भी ऐसी ऐसी घटना घट रही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गैप आ रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और वो एलोन फील कर रहे हैं, अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं। उसकी वजह से लगता है कि वो जो प्यार मिलना चाहिए फैमिली का, पेरेंट्स का, वो प्यार उनको कोई लड़के से मिल जाए, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये गलत वो रिलेशन बना लेते हैं, उसकी वजह से भी ऐसे समाज में घटना होते रहते हैं। थैंक यू। सही, बिल्कुल सही बोला दादा आपने। ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं जो हम लोग महसूस करते हैं, ये चीजें हो रही हैं समाज में, और कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि बच्चों पे जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्यार जो बच्चों को मिलता था, वो अनुशासन जो होता था, वो उसकी कहीं लैकिंग है, कमी है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट LK अग्रवाल दादा टू से सम फ्यू वर्ड्स। दादा, यू आर वेलकम टू आवर फोरम। LK अग्रवाल दादा, आर यू देयर? दादाजी, क्या आप है मुझे सुन पा रहे हैं? LK अग्रवाल दादा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? He is not there, I think. Now I'll request Rajendra Dada. Rajendra Dada, I'll request you to say few words. Okay, Didi, thank you very much. Namaskar, everyone. You are welcome. Welcome, Dada. The subject was that how so many Saddhas are stuck in toxic relations. तो ये बड़ा तजुब होता है कि a lot of these women are bright, smart, independent, but despite being strong in other areas, they are unable to walk away. I am talking in relation to the married women who are being tortured or feeling the reasons are, you have already discussed and I have heard, and the reasons are very lot. For example, I'll quote another point. This was it was a time that she learned that being feminist, outspoken, successful, loud was no protection against violence. Every time my inner voice urged me to walk away, a mix of reaction and mention held me back. The reason is always something outside the abused woman: family, society, shame, children, hope, fear, a mistaken belief that there will be a better tomorrow. This is the statement I'd like to say for the women who are already in that relation. Mostly we talk of the protection. But Baba also says we should be very clear. The trend of the age is irresistible. Remember this. For in this too, there is a dynamism. It is the duty of intelligent people to channelize the trend to the age towards the path of benevolence by applying their intellect. And that is what we are talking, and we are supposed to talk. As Veena Didi told, that right from childhood is a very long-term solution. Short-term solution, first I would like to say, the short-term solution is because most of the women, rather I would say 50% of the humanity is 50% women, and they should be taken care. The immediate solution, what I feel personally, is the security part has to be increased drastically. Women can approach the women police officers or security officers. That will be a better solution, and this government can only do that. That is one. The second, which is a lifestyle change, which we discussed, it should be start right from the primary. Some of my brother was mentioning that if you do Panchajanya and Sadhana and all that from the childhood, it's very fine. It looks very nice. Provided everywhere atmosphere is like that. I have interviewed a young guy who's come out of the engineering. I asked him कि भैया तुम तो जब यहाँ से कॉलेज गए थे तो बहुत अच्छे लड़के थे, ये मेरे को बताओ कि ऐसा चेंजेस कैसे आ जाता है तुम लोगों में. He was so plainly told me कि एक्चुअली यहाँ पे तो हम लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, बट द मोमेंट वी गो टू द कॉलेज एक अजीब सा फ्रीडम मिलता है. फ्रीडम के साथ उसमें कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि उनको तरह तरह की मूवीज दिखाते हैं,
And you know that the naturally instinctive, because we have come from the animal background, so जो स्वाभाविक गति है वो अधोगति है. If you want to go up, you have to struggle for that. You have to work for that. You have to do sadhana. You have to do something. But if you leave it as it is bound to go in baser propensities. And his statement was, and that is how things get changes. So there should be second important point Baba ka hi hai, and we all know that two things: women are physically weak and emotionally very more emotional. I may say they are abnormally emotional, and here they get blackmailed by the male partner. I am talking of the women, and I don't know how to address this point, but these two weaknesses, they should be very careful. And parenting is another part. Parenting has to be very, parents cannot say कि हमने बच्चों को भेज दिया. And at the same time, आज मैं देखता हूँ कि शादी होने के बाद parents भी support खींच लेते हैं. Society का तो डर है ही. You have to stand by in all respect, and that is where you can give them strength. और बहुत सारी बातें हैं दीदी, जैसे alcoholism है हमारे समाज में, alcohol पी के because mind doesn't work and they do a lot of. Second very important point, even that government can do. Any Facebook, some Didi told, any YouTube, there is small baser sensitive, जैसे दादा ने बोला था कि ये उसको क्या बोलते हैं, आपको इमोशनली आपको एग्रीवेट करता है, तो उस तरह की पिक्चर्स को इवन गवर्नमेंट कैन बैन इट. Absolutely it can be banned, and this is their duty. So that stimuli नहीं होना चाहिए, इस तरह का negative stimuli नहीं होना चाहिए. Today if you see the marketing, I mean, I'll tell you very frankly, I was searching, I was yoga में, it's all mostly, I mean, yoga जो चला है, इसको भी एकदम commercialize कर दिया गया है. If you go to the yoga videos and audios, you search, you will find, I mean, I don't know, I was searching a Padmasana posture, I did not get, hardly I get it, but lot of nonsense you will get there. So that is what I wanted to say something. And see, we cannot go back. Some of my friends were saying the Gurukul system, that's fine. But we have to be today. We cannot take this reverse. You have to channelize today energy in right direction so that there is no issue. They should not feel. Otherwise, you rightly said that boyfriend, girlfriend, a culture chala. I mean, it has gone to the extent that if you do not have a boyfriend and a girlfriend in a youth community, they feel that you are backward. I mean, this is too much. So these kind of things are there, and I think we should be, I think in nutshell, if I say the lifestyle change of not individual, but of entire society, it starts from primary school. And the second important point is government has to take a responsibility of security of women just by drastically changing 50% security women. They will be easy to access and things will change. That's how I feel. Thank you, Didi. I'm sorry I took probably more time. Thank you. Thank Didi, you, Dada. Thank you so much. I am Yeah, LK yeah, Dada. Agarwal here. Yeah. You were Yeah, calling Dada, me. I'm waiting for you. I was on another meeting. I could hear you, but could Okay. not respond to you. So, Okay, Dada, no problem. so I will say a few words because I was not listening to the full meeting. But as I believe that this meeting is for the violence on women or something like that, this was the topic, and live-in relationship was it. So I want to say two things, that the attraction between male and female is a natural phenomena. One cannot stop it. But the most important thing is what should be the limits. One has to define the limits. Attraction is a natural thing, so it will happen. So I would like to tell you that I was the student of St. Michael's Schools in Patna, where Father Murphy was the principal at that time. So there was one class, which was a very boring class, but very important class, and that was the class of moral science. And Father, in all the Christian schools, now the moral science classes, except for the Christian schools, it has vanished in all other schools. No schools is conducting moral science classes except the Christian missionary schools. So Father Murphy used to take our classes
of moral science. And what in the moral science, because moral science was a boring subject, so the students would have not give very much importance to the class. So the principal himself used to take that class. So everybody was attentive. And what we had learned in the moral science classes has valued so much in our life when we were in the colleges, when we were in the higher studies, when we were in our profession, that we never went right, left or right. So what I would like, somebody was telling about training. So since I am also a trainer, I had been in UNICEF as a trainer, and I had gone to number of colleges and universities to give training on different subjects. So what I say, what I would like to say, that we should develop a training module sort of thing or a PowerPoint presentation, go to the colleges, go to the universities, and preach the gospel of moral to the young generations. You see, the previously in ancient times, law of social control was made, like fear of God, भगवान का डर. तो ऐसा होता था कि आदमी के बचपन से ही सिखाया जाता था क्लासेस में, स्कूल्स में, परिवार में, कि भगवान देख रहे हैं. तो द फियर ऑफ गॉड वाज देयर, कि हम कोई गलत काम करेंगे तो भगवान से हमको पनिशमेंट मिल जाएगा. नाउ दैट फियर हैज गॉन. Nobody has, no young generation has any fear for the God. Now, family bondage. Joint family was there. फैमिली का एक हेड होता था. अगर हम फैमिली के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो हमको निकाल बाहर कर देंगे. तो ये जो डर होता था फैमिली का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था. उसके बाद होता था कि माँ बाप देखता था कि बच्चा अब हमारा हो गया 16 साल का, 17, 18 साल का, 20 साल का, तो भाई इसको फुटे से बांध दो, मतलब इसकी शादी कर दो. तो शादी कर दो तो एक बंधन में बंध गया, तो वो इधर उधर कहीं नहीं जाता था. ये सोशल कंट्रोल होता था. समाज का डर होता था कि अरे समाज क्या कहेंगे, वो डर आज नहीं है. तो बेसिकली ये जो डर था, ये हम लोगों को बांध के रखता था कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करें, और ये सारा डर आज निकल गया. तो आज के लड़के और लड़कियां फ्री हो गए. कॉलेज में आप जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या होता रहता है, या कहीं पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाइए क्या हो रहा है. तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक ने कहा, ट्रेनिंग. जब मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने गया था, उसका तो क्लैट में हो गया था नालसार में, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां जो लड़के लड़कियों का हमने देखा, तो हम उसको बैक ले आए. उसको ILS लॉ कॉलेज पूना में करवा दिया. पूना यूनिवर्सिटी में वो टॉप करी. फिर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में जाकर प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल ले आई. और वही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर मैं भेज दिया होता तो शायद वो इधर ही उधर हो जाती. और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कंसल्टेंट है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको जो गाइडेंस मिला, जो गाइडेंस देना चाहिए फैमिली में, चूंकि हम लोग आनंद मार्गी थे तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था, ये था, तो चलता चला गया. तो बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होगा, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना होगा, यूनिवर्सिटीज में जाना होगा, कॉलेजेस में जाना होगा, ट्रेन करना होगा, बच्चों को समझाना होगा. तो हमको लगता है 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 40% हम लोग टारगेट अचीव करेंगे. दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से. थैंक यू. थैंक यू सो मच दादा. आपने बहुत अच्छी बातें कही है कि हमारा परिवार के अंदर से ही हम लोगों को ध्यान देना शुरू करना होगा और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है. अभी हम देख रहे हैं मीतू दीदी बहुत देर से हैंड रेज की हुई हैं और वो अभी तक एक बार भी हम उनको इनवाइट नहीं कर पाए हैं. सो मीतू दीदी प्लीज. थैंक यू सो मच. सभी लोगों को नमस्कार. दीदी, what I want to say is I want to talk about the government policy on this live-in relationship. The moral policy says कि नहीं होना चाहिए, बच्चों को रोको, ये ट्रेनिंग दो, वो करने दो, and the legal system say it is allowed. So there is no synchronization what we should do or we shouldn't do and what the government allows. आप सारी चीजों को तो लीगली अलाउ कर रहे हैं और उधर से बच्चों को रोक रहे हैं, बेटा मिठाई रखिए बट आपको खानी नहीं है. So the legal system has to be challenged, especially after this Shraddha's case, that why these type of things are allowed in the society. What are the problems that are arising out of this permission? So until unless we strengthen our legal system, we
force them to stop it. We cannot expect कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. अब आप देखिए अल्कोहल इज somehow stopped in बिहार. ऐसा नहीं कि वहाँ अल्कोहल का कंजम्पशन टोटल 0 हो गया, बट डेफिनेटली फर्क तो पड़ा ही है उस चीज का. सिमिलरली अगर हम इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अपना स्ट्रिक्ट रूल बना देगी, तो ये नहीं कि इन ए नाइट इट विल बी स्टॉप्ड, but definitely there will be a remarkable change when we enforce it with power. So this is what I want to say. Thank you so much, Didi. थैंक यू दीदी. गवर्नमेंट और ये लीगलाइज इसको क्यों किया जाता है, इसके एक बहुत से अलग कारण है. इसको हम लोग किसी और दिन हम लोग इस पे पूरा एक टॉपिक ले सकते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी. अभी अमृता दीदी हैंड रेज की है. अमृता दीदी, आर यू लिसनिंग मी? जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल. जी दीदी, मैं एक्स्ट्रा तो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स किए. कुछ सवाल भी थे, बस उन सवालों का जवाब दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि देना चाहिए, इसलिए बस, ज्यादा नहीं. जैसे अभी एक दादा ने कहा कि लड़कियां बहुत स्मार्ट है, इंडिपेंडेंट है, इतनी बोल्ड दिखती हैं, सब कुछ है, लाउड बोलती हैं, उसके बावजूद क्यों उनके वो अपने अगेंस्ट मतलब कुछ होते हुए पे स्टेप नहीं ले पाती हैं. तो इससे एक चीज ये साबित होती है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान हो जाने से या आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखने से नहीं कुछ होता है. सबसे बड़ी एजुकेशन होती है जो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है. कोई कितना भी डिग्रियां लेकर बैठा हो, लेकिन उसके अंदर अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो खुद अपने इंटरनल फोर्स के बारे में क्या नेगेटिव है हमारे अंदर, कहाँ हमारे अंदर राम भी है, कहाँ हमारे अंदर रावण भी है, वो नहीं जानेगा, तो वो कभी सही चीज के लिए एक स्टेप नहीं ले पाएगा. दूसरी चीज की क्यों नहीं, एक पॉइंट और भी है कि दूसरा कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो हम उसके लिए आवाज उठा देते हैं. लेकिन हमारी खुद की तामसिकता जब हमारे मन पर हावी हो जाए, हमारी खुद की एनर्जी हमको हमारे लिए खतरा बन जाए, तो उसके लिए कहाँ कोई आवाज उठा पाता है. विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारे अंदर तामसिकता बढ़ गई यानी विजडम कहीं ना कहीं दब गई, तो हम खुद खींचे चले जाते हैं उस दिशा में जो दिशा हमारे विनाश की समय है, दिशा है, फिर भी हम जाते हैं. क्यों? ये टेक्निकल और बायोलॉजिकल पॉइंट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है. तीसरी चीज की कॉलेज में लड़के लड़कियां क्यों इतने बिगड़ रहे हैं. मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ काउंसलर जॉब किया है, मैंने देखा है इसके पीछे स्टूडेंट्स दोषी नहीं है, इसके पीछे वो सिस्टम दोषी है जो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज पर डिपेंड करता है. उनको कॉलेज को ज्यादा, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उसको सिर्फ असाइनमेंट्स ही करवाता रहता है. और वो असाइनमेंट्स क्या है? सिर्फ थ्योरी. और बच्चों को जानबूझकर, जो बच्चा उनके फेवर में चीजें करेगा तो उसको मार्क्स अच्छे देंगे, नहीं देगा नहीं करे. बच्चों पे कितना मेंटल प्रेशर डाला जाता है पॉजिटिव एजुकेशन के बजाय, मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन. और कितनी काउंसलिंग की जाती है बच्चों को, इस तरह के स्पिरिचुअल सेशंस कितने कराए जाते हैं. कुछ मोटिवेशनल को बुलाकर थोड़ा सा वो करा दिया जाता है, सिर्फ बोलने वाला मोटिवेशन ज्यादा दिन तक काम नहीं करता है. तीसरी चीज कि एक दादाजी ने बोला कि डर, फियर ऑफ गॉड. तो गॉड से डर करके सिर्फ आप अंधविश्वास में पड़ सकते हैं, परमात्मा के लिए प्रेम नहीं जागृत हो सकता है. मैं खुद जानती हूँ कि मैंने कितने लोगों को मैं फेस करती हूँ जो सिर्फ इसलिए साधना की तरफ नहीं आना चाहते हैं, इसलिए गलत चीजों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने बचपन से सुन रखा है अगर ऐसा नहीं किया तो तुमको ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो तुम, वो इतने अंधविश्वास में फियर ऑफ गॉड की वजह से ही पड़े हुए हैं कि पॉजिटिव मतलब साधना की तरफ और तंत्र की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं. दूसरा चीज कि 16, 17, 18 साल में ही मैरिज. बाबा बोलते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती है. कितनी मेच्योरिटी होती है आजकल के समय में 16, 17, 18 साल के बच्चों में, या चलिए अभी तो गवर्नमेंट ने 21 कर दिया है, 21 में भी कितनी मेच्योरिटी है कि वो समझ सके कि सच में मेरे लिए 21-22 साल की शादी हो जाती. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट पर बैठे बैठे लोग जिनकी शादियां तो दहेज के कारण या किसी भी जिस भी वजह से परिवार की उसकी वजह से शादी हो गई है, लेकिन उस शादी में सेटिस्फाइड नहीं है, घर की वजह से ही डर से वो शादी से निकलते भी नहीं है, लेकिन समाज में निकल के दूसरी लड़कियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, दूसरी लड़कियों को यूज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं जब आप सोच समझ
के मेच्योरिटी के साथ एक सही जीवन साथी नहीं चुनते हैं। और दूसरी चीज की लिव इन में, जैसे कि दीदी ने बोला कि गवर्नमेंट भी जैसे कोई भी नियम बनाते हैं तो बहुत सारे पक्ष होते हैं। एक रूल बनता है, उसका इंसान पॉजिटिव भी फायदा उठाता है, उसका फायदा भी होता है, और उसका इंसान मिसयूज भी करता है। जिसमें विजडम होगी वो सही। जैसे कि एक केस हुआ था जब लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं मिला था, एक केस हुआ था, एक लड़की की शादी ऐसे ही कर दी गई थी, दबाव में आके जैसे भी करके उसकी शादी कर गई। वो लड़का खुद ही उसको यूज करवाता था अपने दोस्तों के जरिए, और क्या क्या उसके साथ गलत कार्य करता था। अब वो लड़की बेचारी उसी दौरान उसको कोई ऐसा सपोर्टर उसके खुद के मायके वालों ने सपोर्ट नहीं किया, वो वहां से निकली जैसे भी करके। उस वक्त एक मेल पर्सन ने ही उसको सपोर्ट दिया, जिसने उसको सच में समझा, उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, उस दौरान उसको अपने घर में जगह भी दी। लेकिन वो जो उसका पति था, जो खुद पति उसका मिसयूज करवाता था, वो पुलिस लेकर आया कि मेरी बीवी जो है मेरे होते हुए किसी और के साथ रह रही है, और पुलिस उसको वापस उसी के घर में भेजी, और वो लड़की के साथ डेंजरस केस हुआ। तो ये भी चीज होती, सरकार भी कई बार मजबूर उसको न्यूट्रल डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है दीदी, तो मुझे जो पॉइंट्स पे लगा जरूरी उस पर मैंने बोल दिया। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। मैं स्वर्णलता दीदी का इंतजार कर रही हूँ, काफी देर से वो बैठी हुई थी, मैं उनको इनवाइट नहीं कर पाई। क्या स्वर्णलता दीदी कोई 2 शब्द कहना चाहेंगी? नमस्कार दीदी। दीदी मैं इन सारी बातों का निचोड़ मुझे यही मिला है कि जो स्कूली शिक्षा स्टार्टिंग में जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट भी शुरू से नर्सरी केजी से शुरू में होना चाहिए। माँ के गर्भ में तो बच्चा सीख के आए ही साधना, कीर्तन साधना, ताकि उसका बेस मजबूत हो। मैं दीदी आज कहते हैं जब पेड़ मजबूत हो जाता है तो उसे मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में अगर उसके आसपास बाड़ लगा दिया जाए तो वो सीधा खड़ा होगा। मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ, मैंने भी कोशिश की सुधारने की। ऐसे ही एक ड्रिंकर था, तो मुझे लगा कि मेरे पास हेल्पर नहीं है, तो चलो मैं इससे हेल्प लेती हूँ और इसे मैं समझाऊंगी, सिखाऊंगी, तो ये एक मिसाल बन के खड़ा होगा यहाँ पे, तो इससे और भी सारे सुधरेंगे लोग। मैंने उसी के अपने घर में लाके कपड़े दिए, साबुन, नहाना धोना सब। मैंने कहा नीचे पार्किंग में नहा ले, कर ले, और वहां पे मेरी हेल्प करा कर प्लेटें धुलवाने में। तो इस तरह तुझे काम मिलेगा, साथ में तुम काम भी मेरे साथ भी यहाँ पे हेल्प करवाना। दीदी वो 3 दिन आया रेगुलर, तो कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ड्रिंक करना भी छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। तो आज चौथे दिन जब मैंने प्लेट्स काउंट की तो 11 प्लेट्स कम थी। तो मतलब 2-2, 4-4 करके। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें जहां तक अपना जो स्पिरिचुअल बेस मजबूत करवाना है लोगों को साधना सेवा त्याग के बारे में, हमें ग्रुप्स बना के कह लो या वर्कशॉप जो शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब तक मैं समझती हूँ कि पूरे यहाँ पे संसार में कह लो या जहाँ भी हम रहते हैं, हम कुछ लोग भी मिल के ग्रुप बना के पहले तो तंत्र साधना के बारे में जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तो चेंजेस आना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी दुनिया है कि हम भी जहाँ पे रहते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी, कितने हम अच्छे पॉश एरिया में रह लें, कुछ भी रह लें, लेकिन वहां भी थोड़े थोड़े एरिया में अंदर ही अंदर गंदगी छुपी हुई है। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए जो भी कह लो, तो लेकिन हमें ये मजबूती बनानी पड़ेगी कि हम कुछ पॉइंट्स पे जाके, कुछ एरियाज में जाके, जहां भी साधक लोग रहते हैं, तो अपने कुछ ग्रुप बना के ये काम, वर्कशॉप ही शुरू करनी चाहिए। एक स्पिरिचुअल बेस बनना बहुत जरूरी है, वरना उसके अलावा कोई बचाव का रास्ता नहीं दिखता। तो मैं बस यही थोड़ा सा कहना चाह रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि गंदगी हमारे आसपास हर जगह छिपी हुई है, और हम देखते हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम देख करके भी इस मंच पर यहाँ से नहीं बोल सकते हैं। ऐसी भी बातें हैं वो हम यहाँ ओपन नहीं कर सकते। फिर भी हम सभी जो एक एज का पर आ गए हैं, वो लोग इन चीजों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, और जो एक आगे का जनरेशन जो यहाँ बैठा हुआ है वो अपनी तरीके से उन चीजों को देख रहा है और पेश कर रहा है। हम इस मंच पर सभी का स्वागत करते हैं। और अभी कोई दीदी अगर रह गई हो तो वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके वो अपनी बात को 2 शब्द मतलब 2 लाइन में कहें, क्योंकि हमारा समय अब समाप्त हो चला है।
सृजा दीदी का शायद था तब से हैंड रेज। सृजा दीदी थी? Yeah, Didi, actually what I was trying to say, Swarnalata Didi has said now. Exactly. I think this is what, as part of being in Anand Marga, you know, our effort should be towards increasing this spiritual aspect in women and youth, and of course men also, because for them to understand what being a human is, if whoever is outside that area, you know, be it even a Margi, you know, violence and all that is still going on. So to get there, everybody should be in the process of practicing sadhana, and to bring everyone to this knowledge. Actually, Didi, it is about knowing what the spiritual practice is. Like, we really, all of us really don't know. Actually, women, how many of us, we know what the dogma is, and people really have not got out of it. I'm not talking about the Magi population, I'm talking about the other population. Magi population, we are not able to practice it. Though we have it, we are not able to come up and say that the energy level, that the spiritual level has not risen to the extent that we are not able to face it. We don't know how to face it. We don't know how to bring our mental plate to that level. So it is important. It is not only in the cities, but also in the rural areas, that we go ahead and do this job. One thing, like Didi was saying, the coordinated work, you know, if we put, you know, a week in a day, you know, all of us can put it. So it will make a lot of difference to get people know there is a system like this. First thing. Secondly, to make the youth feel, you know, what being spiritual is. First, let them taste it. You know, to have them taste it is, I'm not saying that they will start getting interested, but the moment they taste it, they know, because what we are exposed now is only avidya, right? We are not yet into the vidya. So materialistic vidya we are getting, but we are not into the real vidya yet. So we as humans need to know this. And there are very interesting aspects for the youth. Why I said get to the interest of the youth is, getting the interest of the youth is important, because they go by the trend. Youth really go by the trend. And if that is so, I'm not talking about Margi population, I'm talking about the non-Margi population. They go by the trend, even to, you know, like that is the way the situation is. If that is so, why not give the interesting part of Tantra? Why not give the interesting part of sadhana about expansion of mind, the higher levels of mind? These things really interest youth. And that is what I was talking about, because Vitu Dada was saying, you know, like nobody will really come into it unless and otherwise they are destined to. But the exposure is important. Why would Baba say that you should take the effort to get everybody into sadhana? Let us look at that way and take our efforts into that. And I think as Margis, this will be our first step. Thank you, Didi. Thank you so much, Didi. Now our time is up. So I will have to bind up this session here. आप सभी लोगों का जोड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करूंगी, मैं हर बृहस्पतिवार को 8 बजे हमारा ये फोरम खुलता है, आप प्लीज इसमें ज्वाइन करें। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ ज्वाइन किए, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शुभ रात्रि।